Hello everyone, welcome to my channel. And today we are covering the topic of culture, and we are looking at culture through the lens of functionalism, or we are looking at the culture through functionalist perspective. So, functionalist view of culture, let's just understand how functionalism perspective stand in sociology. So, functionalist perspective is a sociological approach. That means an approach how you look at society or different part of the society or institution of the society. So, it sees culture as a system of shared beliefs, values, norms, and practices that serve various functions in the society. तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कल्चर को एक सिस्टम की तरह देखता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो शेयर बिलीव वैल्यूज नॉर्म्स के ऊपर एंड प्रैक्टिसेस के थ्रू चलता है एंड सर्व करता है बहुत सारे फंक्शंस जो सोसाइटी में परफॉर्म होता है फंक्शनलिस्ट एम्फेसाइज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर फंक्शनलिस्ट जैसा कि नाम में दिया हुआ है फंक्शनलिस्ट समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट प्ले करता है कल्चर के लिए एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी तो वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेकर आएगा एंड जो फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी है उसको मेंटेन करेगा कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल्चर कैसे काम करता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हम कल्चर को कैसे देखते हैं तो की एस्पेक्ट्स में सबसे पहला है इंटीग्रेशन एंड सोशल ऑर्डर सो फंक्शनलिस्ट जो लोग होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि कल्चर जो होता है दैट प्रोवाइड्स सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ओके कुछ हमें वैल्यू सिस्टम मूल्य मिलते हैं कुछ नॉर्म्स मिलते हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को इंटीग्रेट करने में सोसाइटी में आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि आपके जो भी शेयर्ड नॉर्म्स हैं बिलीफ हैं उसकी वजह से आपको पार्ट बनाया जाता है अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं आप उनको फॉलो करते हैं देन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप राइट यू डू वर्शिप एंड देन यू बिकम पार्ट ऑफ ऑल द फॉलोअर्स सो ये काम है जो कल्चर के अंदर आता है एंड फंक्शनलिस्ट उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नजरिए से देखते हैं इट स्टैब्लिश्ड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड कोहेरेंस तो एक ऑर्डर चलाता है वो सोसाइटी में एक जो सिस्टम से चीजें चली आ रही हैं उसको ही आगे ले जाने की कोशिश करता है एक कोहेरेंस बनाता है एक टुगेदरनेस एस्टेब्लिश करता है बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क क्योंकि सभी लोगों के पास वो सेम वैल्यूज सिस्टम अवेलेबल है सेम नॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको वो लोग फॉलो कर रहे हैं तो यू फील यूनाइटेड यू फील वन राइट सो द कॉमन फ्रेमवर्क आपको दिया हुआ है थ्रू वैल्यू सिस्टम एंड द नॉर्म सिस्टम एंड दैट प्रोवाइड्स the coherence and the sense of order in the society and understanding and interacting in the social work. तो वो जो कॉमन फ्रेमवर्क है वो आपका समझने के लिए संसार को और इंटरैक्ट करने के लिए वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउ सेकंड पॉइंट दैट फंक्शनलिस्ट लुक एट द कल्चर इज फ्रॉम द cohesion and solidarity right so culture play a crucial role in creating a sense of community that is very important because see we know that culture is a man-made aspect right of environment and that is was the necessity at the time when the communities were separated right it is that culture it is that feeling of feeling of being related to somebody else that generates the community feeling in community we also studied the basic fundamental characteristics of a community is that there has to be a we feeling हम की जो भावना होती है दैट इज द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कल्चर उस सेंस ऑफ हम की भावना को वी फीलिंग को जनरेट करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड उसको जनरेट करने के बाद एक सॉलिडारिटी आती है सोसाइटी के सारे लोगों में क्योंकि वो शेयर्ड कल्चर वैल्यूज और जो सिंबल्स हैं वो सब शेयर कर रहे हैं एक बिलोंगिंग शेयर कर रहे हैं एक यूनिटी शेयर कर रहे हैं एंड इससे सोशल कोहेजन सोशल टुगेदरनेस का प्रमोशन होता है सोशलाइजेशन फंक्शनलिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि कल्चर जो है वो लोगों को सोशलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना व्हाट इज सोशलाइजेशन अगेन इट्स अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स and in a very raw manner I would say that socialization is a process where individual transform from biological being to a social being that is what socialization process is so whatever makes humans from the biological species to a social species that process that part is under comes under the socialization process and this process goes through the life it goes lifelong so it never stops so it happens at every stage so that socialization process also comes through the culture because culture teach people the norms and the values of the society
and it guide their behavior, shaping their identities, right? Through the processes like education, family, media, individuals. These are the tools and agents of the socialization process. So individual learn how to function within their cultural context. So for example, the kind of clothes you wear in your society would be definitely inspired and must be approved by the set culture norms of your society. So you see that people in mainland regions are very much influenced from the patriarchal setup, and that's why you see women wearing fully covered clothes, and you go to countries like western countries where women are free to wear whatever they want to, and you go to the middle east country and you see women are wearing hijabs and all these kind of, because it's coming from their culture. Functions for individual and society. Now functionalists argue that the cultural practices and belief serves a purpose. What purpose they serve? फर्स्ट वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. जब इंडिविजुअल का वेलबींग बढ़ जाएगा तो फिर जो सोसाइटी है वो अपने आप ही स्मूथ फंक्शनिंग करने लग जाएगी. बिकॉज जैसे जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जब रिलीजियस रिचुअल्स को हम जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें एक सेंस ऑफ पर्पस देता है, कंफर्ट देता है, एंड वाइल अदर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल स्टेबिलिटी. तो जब वो सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है, व्हेन वी फील टुगेदर, व्हेन वी फील दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग, दैट व्हेन वी फील यूजफुल, then there is no chance that we are going to do something wrong for the society. When we feel detached from the society, there are highly chances that we do something that is not good for the society. And that's the case with the people who have no money, who are thrown away from the society, that they do a lot of in dysfunctional thing. Now, adoption to change, functionalists recognize करते हैं culture को that it evolves over time with the changing circumstances. As we know that culture is changing, right? Every time we see there is a give and take of the culture every day and every time. So while some cultural elements may become obsolete, the new ones emerged to fulfill necessary function in the society, right? The adaptability is seen as the positive aspect to help society maintain stability, right? If we will not change the rigid systems, like for example, if we would not have changed the sati pratha, it would have led our society into a lot of conflict. And that is why it is important that we remove those aspects from our culture which are negative or resulting into something wrong. And it is important that the culture should be refined each time. It should be it should have the characteristics of flexibility, where incorporates the new changes with the coming of time. So, in summarization, when we look at functionalist perspective, we view culture as a system that promotes social order, cohesion, integration. So, all positive thing by providing shared values, and the जो tools है हमारे वो क्या है, shared values and norms. It is emphasizes the positive functions of the culture in maintaining stability. And जब वो positively impact करेगा society को तो वो stability लेकर आएगा, right? Ensuring smooth functioning of the society. Now, now we'll look at the thinker who have given their viewpoint on the functionalist theory. Now, I think the earlier should be Emil Durkheim, but we'll do Malinowski first. Now, there's a quote of Malinowski: "Culture is essential way of thinking, perceiving, evaluating, a way of relating to others and to the world. It implies an endowment of socially standardized skill, habits of action, and of taste and of reason." Now, these are very important things. The way of thinking. So, it is talking about the non material culture, perceiving, evaluating, relating to others, how we can relate to others and the world. That is something culture gave us, right? And habit of action, taste, and reason. So these are the things that he find out through his studies, and we will look at what work he has done, where he has done in the coming up slides. So there is something about Malinowski. He was a pioneer anthropologist, very famous one, made significant contribution to functionalist aspect in anthropology. His field work, right? He has done a field work on Provianda Island in South Pacific Ocean. This lead to development of his functionalist theory.
तो उनकी जो स्टडी हुई थी ट्रोबिएंडा आइलैंड में उसने डेवलपमेंट किया फंक्शनलिस्ट थ्योरी का। उन्होंने एम्फेसाइज किया द प्रैक्टिकल फंक्शंस ऑफ द cultural practices in maintaining the social stability. Malinowski focused on the functional aspect of the cultural practices. He argued that the cultural institutions such as rituals and custom. Earlier we have looked at norms and values. There's also rituals and custom serves as practical functions to meet the human need. How we'll see now. So the key aspects of Malinowski on the functional aspect of culture. Malinowski's functional aspect focused on understanding cultural practices in terms of functions. So, function anything that is resulting into the social cohesion. They serve in meeting the basic need of individual. He says that these functions are serving as the to meet the basic need of individual. एंड बेसिक नीड ऑफ इंडिविजुअल में क्या आता है तो हम आगे देखेंगे सो उसने आर्ग्यू किया था ही आर्ग्यूड दैट द कल्चरल इंस्टीट्यूशन rituals and custom have specific function in helping individuals address fundamental biological and psychological need. Malinowski used methodology of participant observation. Participant observation you will study in third year, though I'll tell you uh, here when you go and live, see, here it is written, involving living among the people he studied. So you go into the field, you live with them, and then you observe them. Sometimes it happens that you don't they're not even aware that you are a observer of them. You became so much part of their culture and their society, right? So this method allow him to grasp the practical functions of customs and rituals within the social context, which was on the Trobriand Island. Now here I pointed out the cultural practice and how they are meeting the biological need. Malinowski ने highlight किया है the connection between cultural practices and satisfaction of basic biological needs such as food, shelter, and reproduction. For example, he studied the Kula ring exchange. This is a very important thing. He studied the Kula ring exchange on Trovianda Island, emphasizing how this ceremonial exchange serves both as economic and social functions by establishing alliance and maintaining trade relationship and reducing conflict. So Kula ring exchange होता है. So for example, there was a ring जिसको अलग-अलग लोगों में दिया जाता है and whenever you give this, that means you are a friend to them. Now, the cultural practices and psychological need. Beyond biological needs, Malinowski explored the role of cultural practices in addressing psychological needs such as reducing anxiety. Culture practices के through हम लोग anxiety को reduce करते हैं, providing sense of security. हमारे साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. He examined how rituals and ceremonies function to elevate uncertainty and anxiety situation like fishing expeditions and moments of crisis. सो आइलैंड पे लोग जाते हैं बहुत लंबा लंबा फिशिंग एक्सपीडिशन करने जब वो अपने लोगों से दूर हो जाते हैं तो जो रिचुअल्स हैं जो सेरेमनीज हैं वो उनको बांधे रखती हैं दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कल्चरल फंक्शन एंड सोशल इंटीग्रेशन मैलिनोवस्की ने एम्फेसाइज किया था कि कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल इंटीग्रेशन एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर सेम ही बात है अकॉर्डिंग टू मैलिनोवस्की प्ले culture plays rituals and ceremonies plays a crucial role in strengthening the social bond resolving conflict and reinforcing sense of community. Malinowski functional perspective had a profound impact on the field of anthropology. Same ही line है. I think you have understand what he is trying to say. So दो बहुत important चीज है biological need and the psychological need. Now second thinker was Emile Durkheim. We must have done this earlier, but कोई बात नहीं. And Emile Durkheim ने एक बहुत ही important quote दिया है, which is man cannot become attached to higher aims and submit to a rule if he sees nothing above him which he belongs to which he belongs. To free him from all the social pressure is to abandon him to himself and demoralize him. वो बोल रहा है कि men cannot become attached to higher aims and submit to a rule if he sees nothing above him. अगर वो अपने से ऊपर कुछ भी नहीं देखेगा तो वो कुछ भी हायर एम नहीं करेगा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा ठीक है तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ वो अपने ऊपर मान के चले एंड कल्चर वो एस्पेक्ट था जिसने वो एंटिटी उसको दिया जहां पे वो बिलीव करता है कि देयर इज समथिंग अबव मी टू फ्री हिम फ्रॉम ऑल द सोशल प्रेशर इज टू अबेंडन हिम फ्रॉम हिमसेल्फ एंड डिमोरलाइज हिम अगर हम जितने भी कल्चर के थ्रू जितने भी हम
सोशल प्रेशर क्रिएट होता है. सोशल प्रेशर यहाँ पे लिटरल सेंस नहीं है, बट सोशल प्रेशर इन द सेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर पुट अप ऑन यू थ्रू द सोसाइटी. अगर हम वो सब कुछ हटा देंगे, सब कुछ से वो फ्री हो जाएगा, तो ही विल अबेंडन हिम टू हिमसेल्फ एंड डीमोरलाइज हिम. तो वो खुद से डीमोरलाइज हो जाएगा. इमानुएल दुर्कहाइम एक फाउंडिंग फिगर है सोशियोलॉजी में, एंड उन्होंने कल्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट को यूज किया था. दुर्कहाइम ने आर्ग्यू किया कि दैट शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज क्रिएट अ कलेक्टिव कॉन्शियस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही पॉइंटेड आउट, प्रमोटिंग सॉलिडारिटी एंड कोहेजन. तो क्या क्या की एस्पेक्ट थे, विल लुक एट नाउ. कलेक्टिव कॉन्शियस. दुर्कहाइम आर्ग्यू करते हैं कि कल्चर जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है शेपिंग एंड मेंटेनिंग द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी. The collective conscience क्या बोलते हैं? It refers to the shared belief, values, norms that binds individual together. Culture provides a framework that guides individual in their interactions and ensure the sense of unity and interaction. Integration and social solidarity again. Jab importance of social integration and solidarity for stability of the society, he argued that the culture promotes social solidarity by creating a sense of belonging and shared identity among individual. तो सेम आइडेंटिटी मिल जाती है जब भी हम कोई भी कल्चर फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस गाय इज फ्रॉम सर्टेन कल्चर. जब हम बोलते हैं ओ यू फॉलो दिस कल्चर, आई फॉलो दिस कल्चर, राइट, राजस्थानी कल्चर एंड ये वाला कल्चर, तो एक शेयर्ड आइडेंटिटी आपको मिल जाती है क्योंकि आप वही चीजें फॉलो अप करते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, देयर इज अ सर्टेन कल्चर दैट दिल्ली हैज, राइट? सो पीपल ऑफ दिल्ली विल use the same word to say someone or to call someone. They will have certain food culture, they will have certain other cultures aspect. तो उससे they get the sense of identity, they get the sense of belongingness, and that's promote the social solidarity and integration. Culture norms and values provides a moral framework that regulates their behavior and foster cooperation, right? People, the same culture, there are high chances that the people from the same culture will help their own people, then the one जो उनसे related नहीं है. Functionalism. Now, Durkheim is often associated with the functionalism. Functionalism is a theoretical perspective that views society as a complex system with various parts working together to maintain equilibrium. It's like a, you can draw the analogy with the human body as well. We have lots of, our body is a very complex system. We have various parts working together and maintaining the equilibrium of the body. If one part of the body stop functioning, the other will get impact. So, from the functionalist standpoint, Durkheim saw culture as element serving essential function for the well-being of the society. For example, religious rituals and symbols, according to Durkheim, promote social cohesion. Same ही बात है जो maintain बार बार बोली जा रही है. Mechanical and organic solidarity. You can second year student can skip this part, but I'll just explain this. दुर्खाइम ने अलग अलग सॉलिडारिटीज के बारे में बात की थी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक. मैकेनिकल सॉलिडारिटी को उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी पर रखकर बताया था एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर रखकर बताया था, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रखकर बताया था. तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जो लोग होते हैं वो बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यूज को शेयर करते हैं, जबकि जो हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पाई जाती है, वहां पे इंटरडिपेंडेंस है एंड स्पेशलाइजेशन है लोगों के अंदर. तो दोनों में ही सॉलिडारिटी है, लेकिन अलग अलग तरीके से है. सो कल्चर अडेप्ट टू द चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर. इस बात को यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है, इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है. So culture adapts to the changing social structure and serves to maintain the solidarity in both type of society. नाउ अनोइमी को आप स्किप कर सकते हैं. दुर्खाइम ने अनोइमी को एक्चुअली बताया था. अनोइमी बेसिकली इट्स अ वर्ड दैट सेज नॉर्मलेसनेस, राइट? यहाँ पे लिखा भी है नॉर्मलेसनेस और ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म. वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके सारे नॉर्म्स खत्म हो जाते हैं. यूजली ऐसी कंडीशंस वॉर्स वगैरह के टाइम पे आती हैं, या पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा कि नॉर्मलेसनेस की सिचुएशन हो गई, राजा जी की डेथ हो जाती है, वो युद्ध हार जाते हैं, एंड फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे कुछ कोई भी कुछ भी कर रहा है, जो दुश्मन सेना है वो प्रजा के साथ कुछ भी कर रही है, कोई भी नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी को भी उठा लिया जा रहा है, तो अ, उससे परेशान होकर रानियां जौहर कर रही हैं, तो वो सारी सिचुएशन नॉर्मलेसनेस की है. तो जब भी अनोइमी को आप देखो,
हमेशा पद्मावत का जो लास्ट सीन है वो याद में आना चाहिए, तो अनोय मी वो है। सो इकोनॉमिक अपहीवल के टाइम पे भी ऐसा होता है। तो दुर्खाइम ने आर्ग्यू किया है दैट अ वेल फंक्शनिंग कल्चर हेल्प्स टू प्रिवेंट द अनोमी by providing a stable set of norms and values that guides the individual and create a sense of order. तो जब तक हमारा कल्चर मेंटेन रहेगा तब तक वो हम अनोमी की सिचुएशन से दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो अनोमी की सिचुएशन आ सकती है। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन पे भी दुर्कheim ने अपना कल्चर का so both are part of the culture, education and socialization, because it actually transmit a lot of values and teachings to the individuals, and that's a part of the culture. तो अगेन वो दोनों जब कंट्रीब्यूट करेंगे टू द टू मेंटेनिंग द लार्जर होल, देन दैट वुड बी Durkheim's point of view. Durkheim's work laid the foundation for functionalist perspective in sociology. एंड उसके बाद हम जो लास्ट थिंकर है ब्राउन, उनको पढ़ लेते हैं। तो ब्राउन was a British social anthropologist, and he made significant contribution to the structural functionalism. Now this is a very important term जब भी हम ब्राउन को पढ़ेंगे। इनफैक्ट इनकी किताब का नाम भी स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी था। एंड सेकंड बुक जो है वो है अंडमान आइसलैंडर आइलैंडर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडमान हमारी खुद की कंट्री में आता है, वहां पे इन्होंने स्टडी करी। नाउ व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? Radcliffe Brown emphasized the importance of social structure in shaping the human behavior and maintaining social order. He argued that the social structure include kinship system, rituals, economic arrangements, serve specific functions to maintain the equilibrium of the society. Functional interdependence. अब structure है तो उनके अंदर जितने भी parts हैं उनके अंदर एक functional interdependence है, मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन पूरा हो रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ही आर्ग्यू दैट ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जस्ट ड्रॉ द एनालॉजी विद योर बॉडी, ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी, है ना, एंड फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। वही है, बॉडी की फंक्शनिंग में भी वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन हैव स्पेसिफिक फंक्शंस टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ सोशल सिस्टम। नाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस को आप लेट्स जस्ट से रेड आरसीबी से कंपेयर कर लो, एंड वो सारे फंक्शन कंट्रीब्यूट करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करने में, है ना, दैट सोशल इंटीग्रेशन। तो दुर्कheim की तरह ही रेडक्लिफ ब्राउन ने एम्फेसाइज किया कि रोल ऑफ कल्चर इज टू प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन। Cultural practice and institution help to bind individuals together and create a sense of belonging. रेडक्लिफ ब्राउन का बहुत ही ये थोड़ा सा दिया हुआ है, 20th सेंचुरी में उनका आइडिया बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था। वो अदर और भी स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट है उनके उनके साथ साथ उनका भी, एंड उनका जो आइडिया है वो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।